नमस्कार ओडिशा ओडिया शिक्षक आपको स्वागत एगेन यूजीसी नेट ऑफ पेपर 1 आउ गोटे पार्ट को आपण मानक समस्त को स्वागत छुट्टी हमें एगेन डिस्कस करिबा आउ गोटे टॉपिक आज रो टॉपिक होजी यूनिटी 3 जोटा कमे जानि छे रिसर्च एप्टीट्यूड नाम रे भी जानि छे स्टार्ट करिबा आज रे क्लासेस नमस्कार नमस्कार समस्त को प्रथमे नमस्कार जय जगन्नाथ तेरे स्टार्ट करिबा ना कोन कहू पिले आ कर किछ क्वेश्चंस अछि okay let's start the class okay your first question rahibo research is best defined as what option 1 collection of facts, observation only, systematic investigation to establish facts, D guesswork. First तुम बुझिबार अछि research means systematic investigation to establish facts. It does not mean collection of facts only, doesn't mean observation only. Okay, it was the all are part of systematic investigation to establish facts. Guesswork totally भूल अछि ठीक अछि ठीक अछि. The primary purpose of research is to what? Prove assumptions माने सुनी सुनाई कथा जोटा जोटा हमें कहछे अनुमान करी कहबा सुनी की कहबा अनुमान करी कहबा जो कथा कि प्रूफ्स न थाए prove assumptions, collect informations, support beliefs, generate new knowledge. ठीक अछि ये भी नुह generate new knowledge is the correct answer. Kaiki the main aim of research is creation of new knowledge or insight. Okay, question number 3, which research is used to solve immediate problems? Basic research, applied research, fundamental research, historical research. So which research is used to solve immediate problems? जानि छे रिसर्च अप्लाइड रिसर्च हो जे कोन अप्लाइड रिसर्च हो आंसर कहीं कि अप्लाइड रिसर्च सॉल्व्स इमीडिएट एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है विथ द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कनेक्टेड प्रैक्टिकली. for research which develop theory is called what? जोटा theory develop करे ताको कोन कहै छै. क्वेश्चन 4 बेसिक रिसर्च. ठीक है बेसिक रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च डेवलप्स theories and principles. ठीक है बेसिक रिसर्च ऑप्शन सी. क्वेश्चन 5 action research is mainly conducted by whom? A scientist, policy makers, teacher or practitioners, statistician. Okay, statisticians. Okay, question of 1 correct answer of what? An action research is done by teachers to improve classroom practices. ठीक है question number 6, which of the following is the first step in research? Data collection, hypothesis, problems, problem identification, analysis. Okay, question number 6, problem identification. Research of first step ला problem. ठीक है problem को केंते analyze करिवे problem solving ना नहीं. Research always starts with identifying a clear problem. ठीक है next question. Question 7 is research problem should be what? Vague, too broad,
clear and specific, ambiguous. कौन हम आंसर सी clear and specific. Clear and specific नथिले तुम प्रॉब्लम ऊपर काम करि परिबो नाही. A good research problem must be precise and well defined. Okay. Question number 8. Hypothesis is dash. Proven statement, research method, tentative assumption, final conclusion. A hypothesis is a temporary assumption to be tested. C. Tentative assumption hobo correct. Kaiki na a hypothesis is a temporary assumption to be tested. Okay, null hypothesis is denoted by what? H1, H0, H2. Simple. H0, null hypothesis. Question 10. A hypothesis must be emotional, biased, testable, fixed. Biased माने differentiate करा है कि रखा है तो भेदभाव कर रखा है तो विभाग कर रखा है तो डिवाइड कर रखा है तो टेस्टेबल जानी चो टेस्ट करी हेबो फिक्स्ड माने फिक्स हेथिबो इमोशनल माने मेंटल. क्वेश्चन नंबर 10 कहबो ना टेस्टेबल इज द करेक्ट आंसर. ठीक अछि. ए हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल थ्रू डेटा. नेक्स्ट सिपा question 11. Variable manipulated by researcher is called what? Dependent variable, independent variable, intervening variable, extraneous variable. Question number 11. The researcher manipulates the independent variable. ठीक है. Next, outcome variable is known as what? Independent variable, control variable, dependent variable, moderator variable. Question number 12. Outcome or result variable is the dependent variable. ठीक है. कौन ना dependent. ठीक है. Outcome और result सब कौन ना dependent variable. बेबले गोटे गोटे जगह ये आउटकम देछि रिजल्ट क्वेश्चन आस जिवो रिजल्ट. ठीक है. आउटकम जाको रिप्लेस कर दबो result दे दबो. ठीक है. Question 13. Variable that affects relationship is what? Extraneous. ठीक है. कौन ना extraneous variable affect the relationship unintentionally. ठीक है. Control of extraneous variable improves what? Reliability, validity, feasibility, bias. Validity. Control of extraneous सेटी कहला जस्ट टिक बरबरु variable that affects relationship is extraneous relationship कहा थ्रू वर्क कर validity. Question number 14. Controlling extraneous variable improves validity. Simple. Question 15. Research design is a what? Data collector tool, statistical method, blueprint of research, hypothesis. Question 15. Research design is overall plan or structure. है नहीं तार आंसर कौन होगा? ब्लूप्रिंट. Which is not a type of research design? Experimental, descriptive, diagnostic, hypothetical. D. Hypothetical is correct answer. ठीक है. Experimental research establishes what? Description, prediction, cause and effect, relationship, opinion. Cause effect relationship. ठीक है. Experimental research identifies cause and effect. Question 18. Survey research uses mainly what? Experiments, observation, questionnaires, case study. Question number 18. Survey research mainly uses questionnaires. Case study method is what? Quantitative, qualitative, experimental, statistical. Question number 19. Case study focuses on in-depth qualitative data.
ठीक अछि क्वालिटेटिव आउ ठीक अछि नेक्स्ट 20 सेंसस स्टडी इंक्लूड्स सेंसस जानि दिबो जनगणना जोटा हुए study includes sample only interpopulation random units selected group कहली जस्ट पॉपुलेशन है ना नहीं इंटरपॉपुलेशन हमरो जो आसे जनगणना हुए सेंसस करे ठीक अछि sampling is needed because what sampling is needed because what population is small population is large research is simple time is unlimited question 21 sampling saves the time cost and effort ठीक अछि कौन बी पॉपुलेशन लार्ज टाइम बचाए ठीक अछि सैम्पलिंग सेव्स टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट से पॉपुलेशन जो लार्ज थिबो सैम्पलिंग कौन करिवो टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट बचेबो by says sample should be what biased convenient representative small sample तुम मन जानि थिबो धन्य गोटे ब्लूप्रिंट गोटे टाइप रो गोटे sample दियंती कोन गोटे डेमो टाइप रो बुझि परछो a good sample represents the population ना नहीं रिसर्च एप्टीट्यूड sample धन्य गोटे घर बनियार अछि ठीक अछि सिविल इंजीनियर कोन कर गोटे डेमो दबो डेमो रे गोटे sample दबो धन्य घर ए चारटा रूम अछि ए घर साइज एमती से घर साइज एमती रहबो ठीक अछि गोटे डेमो दबो तो गोटे फुल घर करी देखि परिबनी है नहीं representative okay simple random sampling gives what equal population equal chance to all units convenience bias question 23 कौन हम ना इक्वल चांस टू ऑल यूनिट्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी ठीक अछि मन के देबो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन 24 stratified sampling is used when population is what homogeneous heterogeneous small आउ रैंडम होमोजेनस माने समानता समान सादृश्यता हेटेरोजेनस असादृश्य स्मॉल छोट रैंडम माने गोटे जोटा रैंडम कहले तुम जानी पड़तो मु एक्सप्लेन करि परनी ओडिया रे ठीक अछि रैंडम माने हठात किनी गोटे माने हठात नै हठात कि नहीं कि नहीं हठात कि नहीं ताको कहंती माने पांचटा भितरु रैंडमली गोटे नेलो ठीक अछि अनुमाने गोटे नेलो ओके हेटेरोजेनस ठीक अछि सादृश्य stratified sampling is used when population is heterogeneous असदृश्य ठीक अछि कोन stratifying sampling is used when population is differs माने असदृश्य समान नहीं पॉपुलेशन सब बळे केबे समान आसीबो कि पॉपुलेशन केबे भी समान आसीबनी ए स्टेट रे ए जिला जदि 300 माने 30,000 लोक अछंती कि 3 लाख लोक अछंती कि 30 लाख लोक अछंती तो से जिला 30 लाख लोक आसीबो बोले किसी गारंटी अछि ना किछि भी नहीं ठीक अछि 25 snowball sampling is useful for what large population hidden population experimental study d survey only question 25 snowball sampling is used for hard to reach groups माने hidden population hard to reach माने आदिवासी से मानक ऊपर snowball sampling उसे hard to reach बुझे परजो माने snowball sampling is used for hard to reach groups माने जो ग्रुप पाखो को पहुंचबा बहुत कष्ट होय question 26 data collected for first time is secondary data primary data published data processed data first time collected जोटा first माने primary ना नहीं फास्ट माने प्राइमरी सीधा कथा बुक्स जर्नल्स आर सोर्सेस ऑफ व्हाट सिंपल सेकेंडरी डाटा माना नहीं ओके Reliability refers to what? Accuracy, relevance, consistency.
objectivity. Okay. 28 consistency, reliability. Reliable हो परिबो. निर्भरता कौन consistency लगातार. Okay. Question 29 variety refers to what? Stability, consistency, accuracy of measurement, reliability only. Question 29 variety refers to correctness of measurement. Okay. माने कौन accuracy of measurement, which is not a data collection tool. Questionnaire, interview, observation, hypothesis. है नहीं hypothesis simple कथा. Hypothesis is a method, not a tool. Okay. परवर्ती प्रश्न. ओके नेक्स्ट जीवा 32 नंबर प्रश्न. Questionnaire should be what? Lengthy, ambiguous, clear and simple, technical. Question 32. Questionnaires should be easy to understand. है नहीं clear and simple. 33. Pilot study helps to what? Finalize results, publish research, test research tools, analyze data. Question 33. Test research tools. कहीं की ना pilot study checks tool before final research. Clear? Okay. 33C. Author explanation कह दो. Pilot study checks tools before final research. Quantitative research focuses on what? Words, feelings, number and statistics. Narratives, simple, number and statistics. Okay. Question 34. कहीं ना quantitative research deals with number data. Okay. But numerical data. Okay. Meanings and experience सेटा ना नहीं कहीं simple quantitative research focuses on meanings and experiences. Easy question. Okay. Question 36. Statistical test to compare two means. It's what? H square, B ANOVA, C test, D correlation. Question number 36. Test compares means of two groups. है ना नहीं test compares means two groups. गोटे जिनस संगे तो टेस्ट करी हबनी टू ग्रुप्स आर कंपेयर करी टेस्ट कर टी टेस्टेड हैला टी टेस्ट माने कंपेयर टू ग्रुप्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 37. ची स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल्स. ठीक अछि ची स्क्वायर्स कहेंगे ना ची स्क्वायर टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. Level of measurement with true zero is what? Nominal, ordinal, interval, ratio. नहीं level of measurement with true zero ठीक है ठीक है ratio scale has a true zero. Example weight है नहीं. Plagiarism means what? Citing sources माने गोटे टाइप चोरी करिया. प्लेगरिज्म वर्डटा बुझी था माने चोरी करिया जन को क्रेडिट आ जन खाई जीवा माने ता काम को मु मोनार देखि. दिस इज प्लेगरिज्म. यूजिंग अदर वर्क्स विदाउट क्रेडिट. ओके. क्वेश्चन 40. सेल्फ प्लेगरिज्म रेफर्स टू व्हाट? कॉपीइंग अदर्स, रीयूजिंग ओन पब्लिश्ड वर्क, कोटिंग टेक्स्ट. डिफरेंस सिंपल. सेल्फ प्लेगरिज्म निज जिंस निज आउथर यूज कला ओन पब्लिश्ड वर्क है ना नहीं. So 41. Ethics in research ensure what? Speed, profit, integrity and honesty. Publication ethics माने कथा गोटे प्रकार integrate honesty. Impact factor relates to what? Book, conferences, journals, thesis. Question 42. Journals. Impact factor measures journal quality. Journal quality check करते. Okay. Question 43. Peer review helps to ensure what? A speed, B quantity, C quality of research, D funding. Question 43. Peer review ensures research quality. Quality of research. Na कौन?
44 DOI stands for what? Digital Object Index, Digital Object Identifier, Data Online Index, Document Object Identifier. Question number 44. DOI gives permanent identification to documents. Eta मन रखिथिबो Digital Object Identifier. तो कौन करे DOI रे काम कौन ना gives permanent identification to documents. DOI ठीक अछि माने कौन ना Digital Object Identifier. गोटे कॉपीराइट आईडी गुड़ा दिया हबो बुझि पालो. क्वेश्चन नंबर 45. H index measures what? Journal quality, research productivity, publisher ranking, conference quality. So 45. H index measures productivity and citation impact means research productivity. 46. Open access journals provide what? Paid access, restricted access, free access, limited access. Question 46. Free access. Open source बा open source माने Google उटा open source ठीक अछि माने free access. Open source माने समस्त access कर पाइबे. Google रे जतक सब आइटम मैक्सिमम आइटम ओपन सोर्स ना किछि आइटम अछि पेड मैक्सिमम आइटम जेमती जेमिनी हो गूगल सर्च इंजन हो गूगल ड्राइव हो समस्त एक्सेस करते ठीक है. क्वेश्चन 47. रिसर्च रिपोर्ट शुड बी रिटन इन व्हाट? इमोशनल स्टाइल, नैरेटिव स्टाइल, क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल, इनफॉर्मल लैंग्वेज. क्वेश्चन 47. रिसर्च रिपोर्ट्स मस्ट बी अनबायस्ड एंड क्लियर ठीक है. कहीं ना रिसर्च रिपोर्ट्स मस्ट बी unbiased and clear ठीक है. 48. Findings of research are presented in what? Introduction, review, results section, abstract. Question number 48. Results section हाँ नहीं कहीं की findings are presented in results. Question 49. Bibliography includes what? Tables, graphs, list of sources, appendices. What? Bibliographer lists all reference right? Okay, list of sources. Question number 50. आज शेष प्रश्न. Replication of research helps to ensure what? Speed, novelty, reliability and validity. Bias, replication, replica, reliability and validity. Okay, replication confirms accuracy and trustworthiness. Okay, आज 50 मार्क्स रो आ गोटे डिस्कशन शेष. क्वेश्चन आशा करूँ समस्त बुझी पारि जदि किसी भी प्रॉब्लम आसीबो पछरे कमेंट करि परिबे. तो ये वीडियो थी पुणी देखा आगामी वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करियो भूलिबे नै. धन्यवाद. थैंक यू ऑल. गुड नाइट समस्त को. जय जगन्नाथ.